Good evening and a warm welcome everyone to the webinar on monthly market strategy. Listeners, inflation worries are on the rise. Input cost is hurting profitability of companies, and fear of sudden rate hike is keeping key market players, key market participants away from the market. The positive part is that the market has managed to sustain above the levels of 15,670 on intraday basis. I want to say when the market was down, it recovered after hitting the levels of 15,700 and managed to survive above the important level of 15,670, which is very, very positive for the market. And on a monthly basis, the market managed to close above the psychological mark of 16,000. Crude is pulling off from the highs, and the dollar index is also correcting from the highs. These are some positives. In short, basically, the market is facing mixed flows, and we need to understand what will be the implication of rising inflation, because this is the main concern. Which are safe bets to buy and what are the levels to technically design our trading strategies. ये सभी जानने के लिए, ये सभी समझने के लिए आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मार्केट फंडामेंटल्स या मार्केट के ओवरऑल आउटलुक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हेमाली है, मिस हेमाली, who is a BFSI analyst, and she will guide us about the overall outlook of the market for the month of June based on the previous fundamentals and coming events. Over to you, Hemali. Thank you, Shrikant. Welcome, ladies and gentlemen, to the strategy for the month of June. We will review what has happened in the month of March in the market, and then we will set forth what the strategy should be going ahead. As we've seen, Nifty was down by 3% in the month of March, and the US dollar return were also even lower. If we see in the chart on the right, we see that India has been one of the most highly underperformers amongst peer countries, except probably the Singapore market. And the reasons for this is 1, strong FPI outflows, 2, EBITDA margin adjustments because of the inflationary concerns that we had in the country. And the third reason was particularly the metal sector, which has underperformed the most by approximately 16% for the month. This was because the government imposed export duty on steel, and therefore the stocks have fallen. My colleague will explain why this happened and how it impacts, but the government's intention was to control inflation, which they've done through a lot of measures, and the pass-through of their inflation in our purchasing power. Amongst other sectors, the ones that have underperformed the most have been utilities, healthcare, consumer durables, and primarily the reason for this underperformance has been that EBITDA margin expectations had to be lowered because of the inflation and inability of a lot of companies to pass this increase in prices. FPI outflows also have been higher. As you see in this chart, the volatility was really high. This on the chart on the right is the VIX index, which decides what the volatility is. And the one on the left is the Nifty and the BSE 500 and how they've performed. From the low of approximately 15,000 odd, it has recovered, or it recovered approximately 8% by the end of the month. One of the key reasons for that is the increase in prices of oil and the impact of it on our yields. As you would know, India imports 80% of its oil, and therefore the high price of oil affects directly to a lot of products. As we go ahead, we shall see how it's been creeping into our purchasing power and other items. The chart on the right, as we see, is the India oil basket. We have compared that from 2008, and we have seen what the 1-year government yield is. There's a really high correlation between the two, if we see from this chart. Also, the yields, 10-year government yields and the volatility index also have a correlation. And therefore, as the oil prices rise in history, so does our yields and therefore the volatility in the market. India basket is very correlated to the international oil prices.
And here we see it from this chart. Except for in recent times, that the increase in oil prices for India basket has been lower than the world basket. That's because we've been aiming and trying to buy cheaper oil from Russia. However, the quantum of this is a monitorable. As we tell you that as oil has been rising, all the other metal stocks have been rising, primarily on account of the war and its impact on commodities. And commodities across all points have risen. Steel is the one that has also significantly risen, but in India it has fallen 8 to 10% because of the duties that we shall discuss later. FPI outflows have been higher. Among peer countries, India's FPI outflows have been the most after Taiwan. However, a lot of DIIs have compensated by buying in the market. This is very similar to what had happened in 2008, where FIIs had sold and DIIs bought. Inflation is likely to peak in India, but it's going to remain sticky at 6.4%. Now, in this chart, we have shown the weights of inflation of each basket of inflation and what has been the rate for the last 4 months. You would see fat and oil, that is edible oil, is the highest, and among others. So transport has been high, vegetables have been high, oil has been high, and most of them are seeing the upside. The reason for that is higher freight. Higher cost of fertilizers, all of them driven by the derivatives of crude. Over the last 1 month, government has done a lot of effort to reduce the impact of this high price. First, it reduced the excise duty of petrol and diesel by 8 and 6 rupees per litre. This is likely to impact inflation by 25 basis points. It also reduced the cylinder subsidy on LPG by 200 rupees per cylinder. It has given an additional 1.1 billion of fertilizer subsidy, especially aiding the farmers. It cut down duty on coking coal, naphtha, ferro, and propylene oxide, which is again for the industry. This is also cutting import duty on intermediate goods for plastic, again, which helps the HDP and LDPE prices. Export duty hike on steel, custom duty-free imports on food items, that is soybean and sunflower oil, limiting sugar exports to 10 million tons, ban on wheat exports, which has also been very helpful, and reducing the effective duty on crude oil exports, that is edible oils. This, we believe, is going to help inflation fall to an average of 6.4%. However, for the next 6 months, it may stay high at between 7 and 8%. In the fourth quarter of this year, it will exit at 4.6. This has been our expectation based on 105 rupees per barrel of oil. Global indices have also corrected. In the chart, we're trying to explain that Indian markets remains relatively expensive to peers. It has remained expensive. A part of it is as FPIs have flown out. Domestic buyers have aided the market and supported the market by making sure that the fall is not as grave as it would otherwise have been. A lot of our risks are that we are expecting crude at 105 per barrel. A higher crude is going to decrease the quality of our fiscal deficit and our yield assumptions. If the Reserve Bank of India undertakes rate actions or liquidity actions that are worse than expectation, then this could have very bad impact on our asset prices. We estimate that the RBI will manage liquidity at 1 to 1.5% of NDTL. Worsening estimates of fiscal deficit and yield is going to be negative for India. We are estimating a fiscal deficit of 6.8 for the government and overall 10% between the government and states. We're also expecting 10-year yield at between 7.25 and 8%. The FOMC minutes have been in line with market estimates of 50 basis points in 2 next consecutive meetings. This has been factored in valuations. However, the Fed is yet to calendar the contraction in its balance sheet, which is likely to reduce money supply in the US. We expect a 20% reduction in the balance sheet by December 23. Interest rate in alternate savings. Now,
a lot, as we've mentioned, that a lot of the support for the market has come from retail participation. And the comparable interest rates in an FD right now is 5.1. In the event banks improve or increase this FD rates, you will likely see money flowing out of equities to retail assets. Currently, the yield for the 1 year forward is 5.1, which is equal to the FD rate. But for the next year, it's 5.8. Worsening food crisis in countries other than India. In the event the food crisis in India worsens or outside India worsens, the government of India may be forced to export wheat, which is currently banned. That could have a negative impact on our inflation expectations. Recession on account of interest rate hikes in the US. Though the Fed has been aiming for a soft landing, if the Fed's urgency increases and it has to raise interest rates more, then the probability of recession in the US rises. This is likely to affect the FPI flows and export-focused sectors like IT. Therefore, our view is that we would like repo rate hikes to be front-ended. We are expecting a repo rate hike of 110 to 135 bips at 5.5 and 5.75% by the end of the year. We would like it to be 5.15 to 5.25 by August. We believe that the liquidity-driven multiple are likely to come off. We also believe that the higher inflation, higher interest rates are going to impact the purchasing power of companies, of customers, and therefore likely demand. We expect a GDP of 7.3% at $105 per barrel of oil. Our range expectation for oil is $90 to $120. And in that range, our GDP expectation is 7.7% to 6.8% at $120 per barrel. We expect inflation at 6.4% and food at 7.3%. As we have said, in the next 5 to 6 months, the inflation could be on the higher side at between 7 and 8%. But the interest rate hike, the duties that the government has put, could reduce inflation to 4.6% by the end of the year. We would like companies to pass on these inflation hikes to reduce pressure on EBITDA. And therefore, we would like companies with higher pricing power and lower debt. This thesis has been somewhat playing out in the market. Why are steel stocks down today is what I would like my colleague to explain. थैंक यू रमानी। अगर अभी हम बात करेंगे स्टील स्टॉक पे इतना करेक्शन क्यों आया हुआ है। अगर आप देखोगे मिड ऑफ मे में गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सब अटके हुए थे बिकॉज ऑफ अ कॉस्ट एस्केलेशन और दिस वाज लार्जली बिकॉज स्टील प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ रहे थे। So to control the inflation, government has imposed an export duty 15% on HRC flat product। मतलब जो कंपनी अभी जो एक्सपोर्ट करती थी उस पर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, which means that practically the company is, I mean government is telling what you don't have to export, आप जो भी आप माल प्रोड्यूस करते हो बनाते हो आपको डोमेस्टिक मार्केट में ही सप्लाई करना। तो करीबन अगर आप देखोगे इंडिया 13 मिलियन टन का स्टील एक्सपोर्ट करती है, उसमें से 10 मिलियन टन फ्लाइट प्रोडक्ट है और बाकी के लॉन्ग प्रोडक्ट है। तो अगर ये 13 मिलियन टन का जो माल जो एक्सपोर्ट मार्केट में जाता था, अगर वही माल डोमेस्टिक मार्केट में वापस घूम के आ रहा है या नहीं डोमेस्टिक मार्केट में ही रहेगा, इसका मतलब हो रहा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक मार्केट में स्टील प्राइसेस पे प्रेशर दिखेंगे। और वही हमने लास्ट 2 से 4 हफ्ते में देखा कि प्राइसेस 8 से 13 टका के बीच में गिरे हुए। अगर आप चार्ट देख रहे हो सामने, अगर स्क्रीन के सामने चार्ट दिख रहा है तो जो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट है उसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एचआरसी प्राइसेस 8 टका लास्ट 2 हफ्ते में नीचे आए हुए हैं और ये रिबार प्राइसेस जो लॉन्ग प्रोडक्ट है वो 13 टका नीचे आए हुए हैं। ये नीचे गिरावट के बाद भी अगर आप डोमेस्टिक प्राइसेस का अगर हम एक्सपोर्ट के मुकाबले तुलना करते हैं, एक्सपोर्ट पैरिटी के प्राइसेस के साथ तुलना करते हैं, फिर भी करेंटली वी आर अराउंड 20%, मतलब जो हमारा 65,000 का भाव अभी जो चल रहा है वो करीबन 20 टका एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस से ऊपर है। मतलब वी वुड सी दैट देयर कुड बी अ फर्दर रिडक्शन इन द डाउनसाइड टू द स्टील प्राइसेस।
बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टील प्राइसेस खाली गिरेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टील प्राइसेस के साथ साथ आयरन ओर पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है बाय 20%, तो 20% से 30% करा कर 30% से 50% कर दिए। इसमें डोमेस्टिक में आयरन ओर कम हो जाएंगे। कोकिंग कोल पे जो 2.5% की इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो हटाकर 0 कर दिए, तो कोकिंग कोल पे 600 से 800 रुपए तक का मुनाफा होगा। तो अगर नेट अगर आप देखोगे तो 6 से 7 हजार का इम्पैक्ट स्टील कंपनी के उससे उस पर आना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि यस, ये अगर लंबा चलता है देन डेफिनेटली देयर कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कैपेक्स जो कंपनी ने अनाउंस की है, एंड गवर्नमेंट विल इवेंचुअली फोर्स द रिवर्सल ऑफ ड्यूटी। 2008 में भी हमने ये ड्यूटीज देखी थी आई हुई, गवर्नमेंट ने 1 महीने में रोल बैक कर दी थी, एंड वी हैड सीन द sharp uptick in the overall earning estimate in the market. Abhi we have to definitely, this is a wrong, I mean, the entire the policy shock for the industry, and as a result, we have cut our earning estimate across the steel side and downgraded the stock like Tata Steel and Jindal Steel and Power to reduce, while SAIL, JSW and NNDC, we currently have a sell rating. So that's all on the strategy and the steel stock per se. Now we will move ahead with the stock that we feel that can be bought at a dip even if the market corrects. We have, as a team, we have selected few stocks which look good from the longer term perspective. तो पहला स्टॉक जो हम बात करेंगे वो जेके पेपर है, जहाँ पे हमारी एड रेटिंग विद फेयर वैल्यू ऑफ 400। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम जो भी फेयर वैल्यू की बात करेंगे वो 12 महीने के पीरियड के हिसाब से है। तो आप जो फेयर वैल्यू, ये बात हम 400 रुपए की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी लास्ट रिपोर्ट निकली थी 23 में, तो वहां से 12 महीने का व्यू लेके हम चलते हैं, उसके हिसाब से हम 400 रुपीज का टारगेट प्राइस पे आए हुए हैं। तो व्हाट इज हैपन इन लास्ट क्वार्टर एंड व्हाट, और हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि जेके पेपर अच्छा है। अगर आप लास्ट क्वार्टर देखोगे तो वॉल्यूम अच्छे थे, रियलाइजेशन अच्छा था, क्योंकि जेके पेपर ने प्राइस हाइक लिए थे नवंबर और मार्च में। हमें लग रहा है कि देयर विल बी अ फर्दर वन राउंड ऑफ प्राइस हाइक इन द कमिंग क्वार्टर, बिकॉज राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की डिमांड हैज गॉन टू has improved substantially after the reopening of a school and academic institution. अगर आप जेके पेपर में आप देखोगे, they have taken a Sirpur operation prior to a lockdown, which was not operating or not performing good because of their presence in writing and printing paper. So with the improvement in demand in writing and printing paper, we believe that Sirpur operation should do well for JK paper, as well as the new packaging unit, which also augurs well for the industry. So we believe that company is well placed to capitalize on the recovery of paper demand. As a result, we expect company JK Paper to report EPS of 60.6 and 71.4 FY 23 and 24, and we continue to maintain our positive view on JK Paper with the fair value of 400. So that's all from my side. Now I call my colleague Amit to share his topic. Thank you, Jatin. We have a buy rating on AEGIS Logistics with a fair value of 3000. अगर अभी आप AEGIS Logistics देखें तो उनका प्रमोटर पेडिग्री, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस मॉडल, historical financial performance, balance sheet, everything has been very impeccable for the last many quarters. और अब recent performance देखो AEGIS का Q4 का, it was in line with expectation. मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है कि लिक्विड डिवीजन कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेरी स्ट्रांगली फॉर द कंपनी विद न्यू कैपेसिटीज एट कांडला, मैंगलोर एंड हल्दिया। और हमें ऐसा एस्टिमेट है कि लिक्विड डिवीजन वुड बी डूइंग वेल फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 2 financial years. AEGIS is also doing very well in the LPG terminal business at all its 3 terminals of Mumbai, Haldia and Pipavav. और अगर हम उनका रिसेंट कमेंट्री सुने AEGIS का, जो मैनेजमेंट ने रिसेंट कॉन कॉल में दिया, उन्होंने ऐसा कहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर लैंड एट मुंबई एंड पिपावा करंटली, एंड दे आर वर्चुअल मोनोपोली इन दिस 2 terminals of Mumbai and Pipavav. LPG sourcing has also picked up in the quarter with opening of travel and economy. The high margin retail gas division is also doing very well for the company. So mota moti LPG segment is firing very well for the company. Last year the company entered into a joint venture with Vopak Terminals Netherlands
And this company has this joint venture has achieved financial closure in March 2022. हमें ऐसा लगता है कि ये जो joint venture है ये will add lot of value to the company from FY25 onwards. Broadly, we continue to believe that Aegis captures the complete logistics value chain starting from sourcing, terminaling to retail distribution of LPG, and will definitely benefit from LPG penetration, increasing LPG penetration in the country. And stock is available at very attractive valuation of 12 times FY24 earnings. So we have a buy rating on the stock with a target price of 300 at 20 times FY24 earnings. Over to Arun for his take on Century Ply. Thank you, Amit. Century Plyboards, we are positive on the stock, and we have a fair value of 670 rupees on the stock. Overall, Century Plyboard का अगर आप business देखें तो company is one of the top players in the domestic wood panel industry. अगर currently आप देखें तो most companies they do not have any presence in all the key segments. जैसे कि अभी Century Ply को देखेंगे तो they are present in plywoods, they are there in laminates, they are there in MDF, which is medium density fiber board, and particle boards. अगर आप उनका रेवेन्यू मिक्स देखें तो 50-52% प्लाईवुड से रेवेन्यूज आते हैं उनको, अराउंड 19-20% लेमिनेट से, सिमिलरली 19-20% MDF से आते हैं, और 5% पार्टिकल बोर्ड और 5% बाकी दूसरे बिजनेसेस से आते हैं. लिस्टेड स्पेस में इनके कॉम्पिटिटर्स आप देखेंगे तो है ग्रीन प्लाई है, ग्रीन लैम्प है, ग्रीन पैनल, रोशिल डेकोर है. कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में एक 5 ईयर का रोड मैप प्रेजेंट किया था, वेयर दिस वाज बिड फॉर FY21 से लेके FY26 के लिए उन व्हाट विजन दे हैव. तो इनमें 3 चीजें आई जस्ट लाइक टू हाईलाइट हियर. One is the company is expecting to achieve revenue of 5,000 crore rupees by FY26. Now FY22 में आप इनकी रेवेन्यू देखेंगे तो 3,000 करोड़ थी. So FY26 तक they want to take it to 5,000 crore. FY22 में ऑलरेडी इनकी रेवेन्यू 42% ग्रो हुई है. केपेक्स में काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. केपेक्स में दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 1,200 प्लस करोड़ रुपीस ओवर द नेक्स्ट 5 years, और इनमें मेजॉरिटी जो सारा केपेक्स आ रहा है वो कैपेसिटी एक्सपांशन की तरफ ही आ रहा है. और थर्ड थिंग, दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट गेनिंग मार्केट शेयर एंड इंप्रूविंग ROCs फर्दर फ्रॉम दीज लेवल्स. इनकी केपेक्स जैसे मैं बता रहा था आपको, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ केपेक्स जो है इनका MDF कैपेसिटी इंक्रीज करने में जाएगा. अब मैं थोड़ा सा आपको MDF के बारे में बताऊं तो MDF की डिमांड काफी स्ट्रांग है मार्केट में, और ये आप कंपनी के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस में देख सकते हैं. FY22 में कंपनी ने बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक्स लिए थे MDF सेगमेंट में, बिकॉज इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गए थे. And despite that, the company was able to improve the MDF business EBITDA margin by 600 basis point in FY22, and this was the highest so far which the company has done in EBITDA margin in the MDF segment. So आप देख सकते हो कि डिमांड काफी स्ट्रांग है. We are seeing new capacities coming even from other players. और ये काफी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. इसमें इन्वेस्टमेंट्स केपेक्स काफी हाई लगते हैं, तो इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, अनलाइक कि प्लाईवुड में जहाँ पे काफी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी होते हैं. FY22 में इनकी रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताई 42% ग्रो हुई है. एबिटा मार्जिन इनका 180 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है. दिस इज डिस्पाइट कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़े हैं पिछले साल, और इनकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी रही है 64%. इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज अबाउट 20%. Overall plywood demand is very healthy, and the company plywood including MDF and other segments, and the company's capex towards capacity expansion is also giving us good growth visibility for Century. अब हम valuations की तरफ देखें तो stock is trading at a premium as compared to other listed players, but which we believe is on account of क्योंकि इनका presence मैंने बताया ये सभी segments में present है. इनका performance FY22 में काफी strong रहा था. काफी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर कैपेसिटीज बिल्ड करने में. बैलेंस शीट काफी हेल्दी है और रिटर्न रेशियोज भी काफी हेल्दी है. इनकी जो केपेक्स मैंने बात की थी 1,200 प्लस करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं FY21 से 26 में, मेजॉरिटी ऑफ दीज केपेक्स वुड कम फ्रॉम द कंपनीज ओन इंटरनल अक्रूवल्स. सो इनकी डेट कुछ ज्यादा बढ़ने नहीं वाली है. डेट द कंपनी ब्रॉडली विल रिमेन डेट फ्री, और ओवरऑल रिटर्न रेशियोज भी काफी हेल्दी रहेंगे. So we have valued this company or stock on 32 times PE on FY24, and we are positive of Century Ply with a price target of 670 rupees. Thank you. Over to Purvi. Thank you, Arun.
गुड इवनिंग एवरीवन। सो फार्मा में से आज जो स्टॉक हमने चूज किया है वो है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन बाय है विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 630। सुवेन की अगर बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम क्रैम्स भी की तरह से जानते हैं, इस स्पेस में ऑपरेट करता है। So let me just talk about what happens in CRAM space. So in this thing, the multinational companies come to Indian generic companies so that they can collaborate and develop new medicines at a lower costing. And also there is an exclusivity to this medicines because they are still under, the R&D stage. तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज के साथ प्रेफर किया जाता है बिकॉज इंडियन कंपनीज कैन रिड्यूस द cost of this manufacturing. So Suven is a very known player in the space of central nervous system, which is brain related disease के लिए, जैसे कि Alzheimer's होता है या dementia होता है, इन categories को ये target करते हैं. So in the recent time, the company, because of the COVID ongoing the pandemic, which is still showing its effect in China as well as on the transportation cost, conservatively management ने 10 to 15% का sales growth 23 के लिए guide किया है. But अगर हम देखें तो historically for the last 5 to 7 years, the company has grown at 18% CAGR at least. So इनके दो divisions है, जो CDMO जिसको हम contract development and manufacturing बोलते हैं, वो division and formulation launches is going to drive the growth. So in the last few months, if you see, pharma stocks have corrected more than 20-25% from their highs. And, they have come to a band where it is a little less expensive, or in a reasonable band is what they are trading at. So we've upgraded our rating from reduce earlier to buy now. And we've valued the stock at 24 times its FY24 earnings. That's all from my end. I now hand over to Pankaj. Thank you, Purvi. So next in line we have IRB Infrastructure Developers. तो इस स्टॉक पे हमारा बाय रिकमेंडेशन है और हमारा टारगेट प्राइस 315 रुपए है, और अगर करंट प्राइस से अगर अपसाइड पोटेंशियल देखेंगे तो मोर देन 35% है. तो अगर जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ये दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी से डिफरेंट है बिकॉज ये कंपनी रोड डेवलप भी करती है एंड रोड एसेट्स ओन करती है. So they bid projects on a BOT basis, HAM projects basis and TOT model. अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो मोर देन 2 decades की हिस्ट्री है कंपनी की. इस बिजनेस में हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज फेल हुई है लाइक ILFS एंड ऑल, बट यहाँ पर IRB has sustained all the cycles that we have seen and they have done well in terms of executing projects, generating cash flows and overall giving, creating value for the investors. So अगर लास्ट 12-13 साल में अगर फाइनेंशियल्स की ग्रोथ की बात करेंगे तो उनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है करीबन 16% से ग्रो हुई है और उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 22% से ग्रो हुई है. और अगर ये लास्ट अगर ईयर की बात करेंगे तो कंपनी ने ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग किया है एंड दे हैव रिड्यूस्ड डेट आल्सो एंड इवन द टोल बिजनेस जो कि उनका जो कोर बिजनेस है वहां पर भी टोल रेट हाइक्स हुई है, उसकी वजह से काफी अच्छा परफॉर्म किया है. ओनली थिंग इज लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा रेवेन्यू जो हम वीक रहा है एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव. दैट्स व्हाट वी बिलीव बिकॉज द टोलिंग हैज इम्प्रूव्ड, द टोल ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड एंड इवन द कंपनी हैज गॉट द टोल रेट हाइक बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन्फ्लेशन विच इज बीन पास्ड ऑन. सो अगर करंट ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 16,000 करोड़ की है और इसमें जो ऑर्डर बुक का ब्रेकअप देखेंगे तो करीबन 5,500 करोड़ का जो ऑर्डर है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस का है और 10,500 करोड़ का प्योर कंस्ट्रक्शन जो EPC बिजनेस है वहां पर है. और लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 7,500 करोड़ का ऑर्डर ऐड किया है. और इस साल भी अगर आप बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट का प्लान है रोड कंस्ट्रक्शन एंड रोड न्यू प्रोजेक्ट्स अवॉर्डिंग वो काफी स्ट्रॉन्ग है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, पर्टिकुलर रोड साइड में, तो कंपनी बेनिफिटेड रहेगी. और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टोल एसेट्स की बात करें तो कंपनी जैसे मुंबई पूना टोल प्रोजेक्ट है वो ऑपरेट करती है और वहां पर भी ट्रैफिक जो है इम्प्रूव, इनफैक्ट टोल रेट भी इंक्रीज हुआ है. इवन अहमदाबाद बड़ोदरा प्रोजेक्ट में भी टोल रेट इंक्रीज हुआ है. अगर आप फंड रेजिंग, तो कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिसेंटली जो कंपनी ने करीबन 5,400 करोड़ का फंड रेज किया है
एंड वो प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, एंड उसके थ्रू उसने कंपनी ने डेट रिडक्शन किया है. सो इन दिस लास्ट क्वार्टर दे हैव रीपेड लास्ट ईयर दे हैव रीपेड रफली 3,200 crore ऑफ डेट थ्रू दिस preferential fund raising. So this will also free up the capital for future growth. And क्योंकि फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट अवार्डिंग होनी है बीओटी साइड में काफी कम कंपटीशन, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड प्लेयर्स हु आर एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ, एंड IRB is one of them. So we are positive on the stock. We have a buy recommendation on it, and we have a target price of 330 rupees, and we have valued the stock on sum of the parts based valuation. So on IRB we are positive. Next in line, Sumit. थैंक यू पंकज, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. हमारा ई कॉमर्स स्पेस के अंदर इंडिया मार्ट इंटरमेश हमको काफी अच्छी कंपनी लगती है. हमारा फेयर वैल्यू 6,000 रुपीज है और हम इस पे बाय रिकमेंड कर रहे हैं. हमको ये क्यों अच्छा लगता है? सबसे पहले आज की डेट में इतनी अनसर्टेनिटी के सामने कंपनी के पास ऑलरेडी 907 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ चुका है. डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं क्योंकि ये बुक्स में कैश आ चुका है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स में अब ग्रेजुअली ऐड होता जाएगा ये. सो कहने का मतलब है 907 करोड़ रुपए आपने अपफ्रंट कस्टमर से ले लिए हैं, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, प्लस वो अकाउंट्स में बुक होता रहेगा. तो रेवेन्यू विजिबिलिटी हमको सामने सामने दिख रही है यहाँ पे. दूसरा, एवरी क्वार्टर रेवेन्यू विजिबिलिटी विल इम्प्रूव बिकॉज और डिफर्ड रेवेन्यू ऐड होता जा रहा है एवरी क्वार्टर. तो उससे भी काफी इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी इम्प्रूव होती रहेगी. अब क्यों रेवेन्यू बढ़ रहा है या डिफर्ड रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है उसका? क्योंकि कंपनी बोल रही है कि मैं पहले 6 से 7 हजार कस्टमर एवरी क्वार्टर ऐड करती थी. अब मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी बोल रही है कि नाउ वी विल ऐड 8,000 to 9,000 कस्टमर एवरी क्वार्टर. तो मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इसका जो टॉप कस्टमर होगा, वो टॉप 1% कस्टमर, वो 8 लाख रुपए महीने के उसको देता है वो एज ए सब्सक्रिप्शन पैकेज में. तो 8 वो उसका टॉप 1% कस्टमर कैटेगरी में आता है. तो कहने का मतलब है कि इवन इफ लोअर स्ट्रेटा में भी ऐड हो रहे हैं कस्टमर्स, कुछ मिक्स मिडिल साइज में हो रहे होंगे और वेरी फ्यू इन लार्ज साइज में, बट इन कस्टमर्स को वो धीरे 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 करके अपग्रेड करता जाता है, उनको और वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है, जिससे कस्टमर अपग्रेड होकर ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लें वो. तो इसका रेवेन्यू इंप्रूव होता है, कस्टमर को बहुत फायदा होता है बिकॉज ऑफ दे गेट लॉट ऑफ लीड्स आउट ऑफ दिस. और इसने लाइक अमेजोन और दूसरी कंपनीज के तरह के इसने पूरा एक इको सिस्टम क्रिएट कर लिया. अमेजोन B2C ज्यादा है, ये B2B है. इसमें ये बोलता है कि मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाऊंगा कस्टमर के लिए. कस्टमर व्हेन मैं बोल रहा हूँ तो इज बेसिकली एनी शॉप और एनी होलसेलर और एनी बिग डीलर मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो वो बोलता है कि तुमको बायर सेलर मैं मिला के दे रहा हूँ, तुम्हारा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट मैं करके दूंगा, विच इंक्लूड इन ऑन रोड एंड शिपिंग लॉजिस्टिक भी मैं करके दूंगा तुमको, प्लस तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो भी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करवा लो आप, और 1 मंथ का मैं अपने पास क्वेश्चन रखूंगा ताकि तुमको क्वालिटी अगर दोनों बायर सेलर में नहीं सेटिस्फाई तो आई विल नॉट पास ऑन द पेमेंट टू द सप्लायर. सो बेसिकली ये एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है इसने, जिसके अंदर ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बनता जा रहा है फॉर कस्टमर्स. तो कस्टमर को भी कन्वीनियंस बहुत है कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सारा पेमेंट यही हो जाएगा, अपना सारी सर्विसेज मुझे यही मिल रही है. सो एक अच्छा बड़ा कंपनी स्केल अप होने के लिए ये तैयार है. We like Indiamart's deep-rooted industry leadership, valued and we have valued the company at 45 times price to earning multiple on FY24. So we remain bullish on Indiamart from long-term perspective. Now we open the floor for question and answer. Grab this opportunity to ask as many as questions you want to ask. Thank you, team, for such an insightful presentation and stock picks for our participants. Dear viewers, we will now open the floor for Q&A. So I request you to drop your questions in the comment section below. Guys, please note that the target prices for our stock recommendations are on 12 months horizon basis. Now, starting with the first question. Please share your views on Tata Motors shares. Arun sir, can you please take this one? Yeah. See, Tata Motors, broadly we have been positive. उसमें उनका जो 3 businesses जैसे
डोमेस्टिक पैसेंजर कार बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है और JLR बिजनेसेस है। इसमें जो इंडिया ऑपरेशन है उसमें डोमेस्टिक पैसेंजर कार बिजनेस आता है और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस आता है। डोमेस्टिक पैसेंजर कार व्हीकल बिजनेस में कंपनी हैज बीन डूइंग वेरी वेल। आप लास्ट 1 या 2 साल देखेंगे तो उन्होंने काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया। इनफैक्ट जो मई के नंबर्स आए थे वो भी काफी अच्छे रहे थे कंपनी के। और गोइंग अहेड वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू कंटिन्यू टू डू वेल इन दिस पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, क्योंकि जितना इनके वॉल्यूम्स ग्रो होंगे उतना इनका ऑपरेटिंग लिवरेज बेनिफिट आएगा और वहां से इनके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे ये बिजनेस में। सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में ये मार्केट लीडर है और यहाँ पे ऑलरेडी इनका मार्केट लीडरशिप है ही, और इन्होंने काफी रिसेंट फ्यू मंथ्स का आप नंबर्स देखें तो काफी अच्छे रहे हैं CV सेगमेंट में। CV सेगमेंट बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री है और हम ऑलरेडी अप साइकिल में हैं अभी CV इंडस्ट्री के, एंड विच विल कंटिन्यू इन आवर एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो अगले 2 साल में हम CV इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, एंड टाटा मोटर्स बीइंग द मार्केट लीडर विल आल्सो बी बेनिफिटिंग। अगेन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कि जितनी आपकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उतनी आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे और आपकी अर्निंग्स पे उतना बेटर इम्पैक्ट आएगा। थर्ड बिजनेस JLR का बिजनेस है, वहां पर अभी थोड़ा पेन अभी भी है और वो लार्जली है इसलिए है बिकॉज सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस चल रही है ग्लोबल लेवल पर, इवन इन इंडिया में भी है। तो ये जो बिजनेस है इसमें कंपनी ने लास्ट 2 सालों में काफी मेहनत की है, उन्होंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स काफी कम किए हैं। तो जैसे ही सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएगी और जैसे ग्लोबल डिमांड प्रोडक्ट्स की उनके प्रोडक्शंस बढ़ेंगे वहां पर, there also they will see good margin improvement, cash flows improve होंगे, and this business will also do good in the coming years। थोड़ा बहुत नियर टर्म पेन है जब तक कि ये आपकी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की इशू सॉर्ट आउट नहीं होती है। सो once all anyways, and EVs में just to add this EV वाला पार्ट भी इनमें, because EVs में I mean it is hear a lot about EV में उन्होंने बहुत छोटा पार्ट है अभी उनके बिजनेस का, बट एनीवेज उन्होंने एक हेड स्टार्ट लिया हुआ है इंडस्ट्री में, उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है मार्केट में एंड दे आर डूइंग डिसेंट। तो वहां पर भी आई थिंक दे ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने सब्सिडी सेटअप किए जहां पर TPG के साथ इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो आई थिंक दीज थिंग्स पुट टुगेदर मेक्स द टाटा मोटर्स अ गुड प्ले फॉर अ लॉन्गर टर्म। नियर टर्म वोलेटिलिटी स्टॉक में रहेगी। मेटल प्राइसेस में अगर कोई करेक्शन आती है, जैसे हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी में अभी जैसे जतिन ने हमें बताया था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से मेटल प्राइसेस और या स्टील प्राइस कम हुए, तो ये सब ऑटो कंपनीज को बेनिफिट करती है और इसमें टाटा मोटर्स डेफिनेटली भी बेनिफिट होता है। सो ओवरऑल वॉल्यूम साइड पर ग्रोथ पे देखें तो वी आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। मार्जिन्स पे हम देखें तो एक तो ऑपरेशनल लेवरेज की हम बात करें, और सेकंड अगर कमोडिटी का प्राइसेस में कमी आती है या करेक्शन होता है तो वो ऑटो कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद होगा। ये टाटा मोटर्स हमारा बाय है एंड वी आर पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। थैंक यू अरुण। Next question is for Jatin. Jatin, is Nalco good to invest? Yes, Rini, definitely. If we are looking on a Nalco, probably Nalco is a better place in a non-ferrous space, is a better space in a metal sector if we look from an overall perspective. And Nalco is present in aluminium, जो aluminium बनाता है through alumina. So last year was a record year for Nalco because of a higher prices. Aluminium prices जो $3,200 तक पहुंच गए थे fourth quarter of FY22 में, because of a supply disruption arising due to a Russia-Ukraine war. Now with the supply easing and definitely COVID lockdown in China and the higher global inflation, the aluminium demand at the higher prices have started seeing a demand destruction. And there's a possibility that the market, which are estimating a deficit of 1.7, 1.8 million ton for the current financial year, probably that deficit will come down. But having said that, we believe that even at 2,200 or current aluminum prices, which has corrected to 2,900, even if the aluminum prices correct from current odd levels to 2,500 also, till that time, we believe that Nalco will continue to make up positive numbers, report positive numbers on the EBITDA, because the cost of production comes to around $2,000, $2,100 per ton. Now, higher cost of production is largely due to the increase in the coal price in India. And if you look at the imported coal price, which has reached to $280 per ton, as against $100 per ton in the last year. So because of a higher cost of inflation, we believe that aluminum prices are likely to remain at the elevated level. This, besides the multi-year deficit, will support the prices as well. So taking both these things into consideration, and Nalco position as far as the backward integration is concerned in terms of alumina and bauxite mine,
we have a ad rating on the stock with a fair value of 110. So yes, Nalco is a good investment bet. One can look at it as an investment idea with a fair value of 110. Thank you, Jatin. Next question is for Hemali. Hemali, please share your views on IDFC First Bank. We do not cover the bank, so we will not be able to share the view on the same. Okay, Hemali, can you answer on SBI, your views on SBI? Yes. So our long-term view on SBI is positive and a buy. Our overall thesis for banks is we believe that the larger banks will be in a better position at this current point of time. For as far as smaller banks are concerned, we believe that because of a lower base in the last 2 years on account of higher provision, there's going to be likely good amount of earning recovery. Having said that, given the volatility in the market and given uncertainty around inflation and interest rates, we would like to have safety. We would like investors to have safety and invest in larger banks. Therefore, SBI is one of our buy stocks. However, we have to see that there are certain uncertainties with respect to how will inflation pan out, and therefore how the interest rates will pan out, and what will be the GDP of the country, because obviously credit growth is a function of GDP. As of now, credit growth has been staying steady. The last data released showed that the credit growth was strong yet, driven by housing. And this is one of the monitorables that we would like to have. On an overall basis, we have a positive and a buy view on the stock. Thank you, Hemali. Next question is from Pharma Space. Purvi, can you share your views on 3 stocks? One is Lupin, and Metropolis, and Zydus Life. Yes, thank you, Rumi. So on Lupin, we have an ad rating, and if you see the stock has corrected more than 50%. जैसे हमने पिछले कई सारे webinars में बताया था कि इनकी 5 facilities थी जहाँ पे इनके US FDA issues थे, उसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल्स आना बंद हो चुका था और इसकी वजह से asset utilization was lower. Now what has happened is though units have 2 API units have cleared the FDA inspection, so that has been a little bit positive news. But if you see, पिछले 2-3 क्वार्टर से उनके नंबर्स खराब चल रहे हैं because like I said कि asset underutilized है तो cost pressure है margins पे. So because of that, we feel कि they still have a long way to come ahead. So I would rather suggest to look at stocks which are better placed. Next is on Zydus Life. Zydus Life may, as we know, the company has announced a buyback. And I think as an investor, you should be applying to that buyback because that's a good price. It's a huge upside from the current market price. Of course, the acceptance ratio may be low, but still it is better to apply that. And in the meanwhile, if the stock price is moving up, that's your opportunity to move out of the stock and move to better stocks. In case of better stocks, I would like to give a few names like Cipla hai, Sun Pharma hai, ya Torrent Pharma hai. They've been doing recently very well in the domestic space. So I guess these are a couple of switch ideas that you can do. Lastly, on Metropolis, diagnostic sector में जैसे हम जानते हैं कि medical cost is a big burden for any common man. So now what has happened is that in the pandemic that has become evident. And for an example, अगर हम देखें तो कोविड टेस्ट जब शुरू हुए थे तो 4,500 रुपए पर टेस्ट चार्ज किया जाता था. फिर गवर्नमेंट ने जब इन पे इनिशिएटिव्स लिए तो उन्होंने सीधा वो कॉस्टिंग 400 रुपीज पे लाया. तो सिमिलरली अब नॉर्मल टेस्ट भी अगर हम देखें तो वहां पे भी प्राइसेस काफी कम किए जा रहे हैं. तो जो लार्जर प्लेयर्स है जैसे कि डॉक्टर लॉज और मेट्रोपोलिस, उनको थोड़ा मार्जिन में प्रेशर होना जायज है. There are certain other players जैसे कि कृष्णा जो पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं और उनके प्राइसेस एमआरआई के लिए या सिटी स्कैन के लिए are almost like 50 to 80% lower compared to these players also. So there is a lot of competition in this space. So for Metropolis, currently after correction of almost 30-35% from its high, they're still expensive. So we would suggest that in case if you have bought, you have to have a longer holding period. Otherwise, the returns are not going to be that faster. Thank you. Thank you, Purvi. Pankaj sir, can you share your views on Sharda Cropchem?
So Sharda Cropchem, this stock is in agrochemical space and largely they are in the global market. और इनका अगर business model देखेंगे तो it's they work on a asset light business model because they don't own any manufacturing or something. So their expertise is on the registration. So they get registration in different markets like North America where they're very strong, and they source all the raw materials from different locations like China and other locations. So in that way they keep the asset light business model. इसकी वजह से इनकी returns ratios काफी strong है, ROE वगैरह 19-20% के range में है. अगर आप overall business की बात करें, outlook की बात करें तो global agrochemical market जो है वहाँ पर काफी positive outlook है, and this company is largely focused on generic side. तो generics में बहुत सारे product off patented हो रहे हैं, तो वहाँ से अब opportunity emerge हो रही है. So in that way they can grow financials, no doubt on that thing. लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में काफी अप्रिशिएशन हुआ है स्टॉक प्राइस में. तो इट्स नॉट टू फार फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई, एंड वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है. अगर फॉरवर्ड बेसिस पे भी कंसेंसस बेसिस पे देखेंगे तो 15-16 के मल्टीपल पे चल रहा है. हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक हम कवर नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये काफी रन अप आया है तो वन कैन वेट फॉर करेक्शन. Thank you, Pankaj sir. Next question is from IT sector. Sumit sir, can you please share your views on Tata Elxsi, HCL Tech and KPIT? See, HCL Tech, we are very bullish on the company because a lot of developments happening in the company. If you have noticed that post Shiv Nadar, who is the original founder and promoter of the company, his daughter has taken charge of the company and she has done phenomenally well in turning around the company. We believe the earnings growth potential is quite significant in this company, and the type of orders they are executing and the way they are diversifying to the different geographies, we believe the growth momentum will remain strong for the company. We believe the fair value is 1,300 rupees for the company, and from the current market price, the upside is quite decent. So HCL Tech, we are bullish. Coming to Tata Elxsi and KPIT, see, both of them are IT engineering company and they are different from HCL Tech. So they are doing more of an autonomous car work or engineering part of the any maybe aeroplane cockpit they are doing, or if even autonomous cars is there, then your the manufacturing plant which are coming, which are more robotic in nature, all those engineering part is done by these two companies. So KPIT, we believe that currently the valuations are quite expensive. Earnings growth potential is huge, but still valuation has already captured that, and we have been continuously telling to sell this stock and look for a better entry point in this stock. So far, Tata Elxsi is concerned, obviously the company is in a similar business model, growth opportunity is good, but given the valuation, the stock still looks very expensive, and most of the positive is already in the price. Though we do not have any coverage on the stock, so I will not be able to give you any target price. But at a lower levels, one should buy. We are not negative on the business model of the company. It is only the valuation which is holding us back to turn out to be positive on these two companies. Thank you, Sumit sir. Next question is for Amit sir. Any views on Jubilant FoodWorks? Yes, Parini, we have a positive rating on Jubilant FoodWorks with an ad rating and a target price of 615. Jubilant FoodWorks, like आप उनका अगर 4Q का earnings print देखें, it was tad soft and we expected it to be a tad soft, but एक पॉजिटिव बात जो Q4 में हुई है वो ऐसा था कि जो ऑर्डर ग्रोथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और हर एक ऑर्डर का जो टिकट साइज है वो भी काफी स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है. और मैनेजमेंट ने ये भी हमें नोट करवाया कि डिस्पाइट टेकिंग प्राइस हाइक्स द डिमांड हैज नॉट इम्पैक्टेड फॉर डोमिनोज एंड डोमिनोज स्टिल रिमेन्स द मोस्ट अफोर्डेबल पिज्जा ब्रांड इन द कंट्री. और एक पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी ने गाइड किया है कि 250 न्यू डोमिनोज स्टोर खोलेंगे FY23 में, विच वाज वे अहेड ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन. अभी रिसेंटली जो स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनका जो इनकम्बेंट MD एंड CEO प्रतीक पोटा, जिसने काफी
हद तक डोमिनोज ब्रांड को एस्टेब्लिश किया था, वो 5 years के बाद कंपनी से उन्होंने रिजाइन किया था, तो काफी स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ था, और वी हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस डाउनग्रेडिंग द स्टॉक. But recently, company has selected Mr. Samir Khetrapal, who is coming from Amazon India, and he has also worked with McKinsey and GE Capital to be the next MD and CEO. He will start his work from September 2022, and he has diverse experience and track record of building businesses and driving operational transformation. तो हमें ऐसा लगता है कि समीर खेत्रपाल के अंदर भी कंपनी काफी अच्छा करेगी. पॉपॉय का स्केल अप वुड कंटिन्यू. हांगकांग किचन भी अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए, वाइल डंकिन डोनट्स इज आल्सो डूइंग वेल फॉर द कंपनी. फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग डाउन फॉर द कंपनी विद क्लोजर ऑफ लॉस मेकिंग outlets. Recently they also launched 20-minute delivery in many key markets for the company. So overall we believe Jubilant Foodworks is progressing well into a multi-cuisine QSR company. We have increased the target price recently from 570 to 615, and we have an ad rating on the stock. Another stock that we like in the QSR segment is one second. Restaurants Brands Asia. We recently upgraded the stock to add from reduce with a target price of 115. हमें ऐसा लगता है कि worst is already priced in the stock, and despite अगर कंपनी थोड़ा भी अगर अपना टारगेट मिस करती है तो it will not be impacted price wise too much. तो एक हमें एक रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया भी पसंद है with a target price of 115. Thank you, Amit. Jatin, please, can you share your views on Z from media space and Tata Communications from telecom? So yes, definitely, I mean, two diverse sector. But yes, if you start looking from a Z, where we have an ad rating with a fair value of 275. अगर आप Z का नंबर देखते हो तो if you look at the core business continues to deteriorate, numbers खराब से खराब होते जा रहे हैं. Margin जो उनकी थी has collapsed to 20% from 30% in the past 2 years because कहीं ना कहीं उन्होंने viewership share loss किया हुआ है. Advertisement environment थोड़ा weak था. Regulatory embargo on subscription. Amortization of higher content amortization pertaining to the elevated inventory and modest increase in OTT investment has taken a hit on the overall performance of the Z. That's the reason we have seen this sharp 10% decline in EBITDA margin in last 2 years to 20% in FY22. Recent developments such as like Netflix plans to launch an ad-supported subscription plan and investments of Zem Modak plus Uday Shankar in Vahyam 18 have dampened these medium-term outlook for OTT as well. Their core business. So we believe that the core business will continue to remain under pressure, and EBITDA margin because of the viewership loss will also continue to remain under pressure. Because of this, we have cut the earning estimates by 13 and 15% and revised our fair value to 275. So we have an ad rating with a fair value of 275. Now coming to your next question on Tata Communication. Tata Communication reported the muted quarter in the last financial year because the numbers were tad below our estimates because of a lower than anticipated growth in revenue and weaker margin on higher operating expenses. But if you look from the growth from the digital business platform business, it continues to remain modest as core connectivity remains steady, while other segments grew at a healthy pace. So in the conference call also the management has indicated that the conversion from a tunnel addition to the order booking have been impacted due to the slowness in the decision making. Order book has also increased marginally in the last quarter. However, they are confident that they will bag a couple of big orders in first quarter of FY23. Tata.com also launched a new product for Film Cloud in fourth quarter of FY22 and has onboarded a couple of customers. So definitely that's a new startup and probably we need to see how it ramp up. So factoring the
last quarter numbers and the slow growth in the fourth quarter order book of fourth quarter, we have cut our FY23-24 EBITDA estimates by 8 to 9%. We also build a higher employee and other expenses. And we continue to retain our ad rating on a stock with a revised fair value of 1400. So on Tata Communication also, we have an ad with a fair value of 1400. Thank you, Jatin. Next question is for Arun. Arun, please share your views on Amara Raja Battery and Ashok Leyland. Yeah. See, Amara Raja Batteries, we have a sell rating. अगर आप इनका फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स भी देखें तो वो हमारे एस्टिमेट से काफी नीचे रहे थे. रिसेंटली कंपनी ने इन्वेस्ट किया है इनोबैट ऑटो करके एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी डेवलपर है, इनमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है. दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रीमियम इनोवेटिव बैटरी फॉर ई मोबिलिटी. अगर पर आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट इंडिया का देखें तो यहाँ पर करंटली OEMs LFP बैटरी यूज करते हैं और इंस्टेड ऑफ द NMC बैटरीज, क्योंकि उसका कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा है. और यहाँ पर इनोबैट का कैपेबिलिटीज नहीं है इस सेगमेंट में. एशियन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स आप देखेंगे तो ये दे आर मच अहेड इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज एज कंपेयर टू द यूरोपियन यूनियन peers, and so these are the challenges we believe there for the company, especially on the EV side. अगर आप अदरवाइज उनकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस देखेंगे तो वहां पर वी आर एक्सपेक्टिंग स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ विच वुड बी लेड बाय रिकवरी इन ऑटो वॉल्यूम्स एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट डिमांड, और हम मार्जिन्स में भी ग्रेजुअल रिकवरी बिल्ड कर रहे हैं. बट अर्निंग्स मल्टीपल थोड़ा आई थिंक मार्केट हैज बीन अ बिट कॉशियस इन रिसेंट टाइम्स गिवन दीज चैलेंजेस स्पेशली ऑन द EV साइड. सो करंटली हमारा राजा पे हमारा सेल रेटिंग है. द सेकंड वन अशोक लेलैंड देखें तो अशोक लेलैंड पे हम पॉजिटिव हैं. हमारा टारगेट प्राइस 150 रुपीज है स्टॉक के ऊपर. टाटा मोटर्स डिस्कस करते हुए मैंने आपसे CV सेगमेंट के बारे में ऑलरेडी कहा था कि सेगमेंट अप साइकिल पे है. FY2021 में हमने बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ड्रॉप देखा था इस सेगमेंट में. FY22 में ऑलरेडी हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखी है. FY23-24 में अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी. सो अशोक लेलैंड का काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल्स ट्रक सेल्स से आता है, तो वहां पर आई थिंक अशोक लेलैंड वुड बेनिफिट. जैसे वॉल्यूम्स इंक्रीज होगी अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आएंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर पॉजिटिव ऑन अशोक लेलैंड. बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस 150 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस. Thank you, Arun. Guys, due to time constraint, we will take only a couple questions more. Next question is for Pankaj sir. Pankaj sir, can you please share your outlook on infra sector? तो इंफ्रा सेक्टर वी हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव. अगर हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन भी हमने जो दिया था उसमें हमने डिटेल में बात की थी कि अक्रॉस सेगमेंट हर एक सेगमेंट में काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फोकस ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. एंड उसके अलावा अगर गति शक्ति प्रोग्राम वगैरह देखेंगे आपने जो गवर्नमेंट ने बजट पे काफी फोकस किया है, इसकी वजह से काफी अपॉर्चुनिटी दिखती है हमें. रोड सेक्टर पे हमें काफी पॉजिटिव आउटलुक लगता है. अगर आप मार्च क्वार्टर की जस्ट अकेले बात करेंगे तो मोर देन 5000 किलोमीटर NHAI ने अवार्ड कर दिया है, अराउंड 5000 किलोमीटर. एंड ओवरऑल अगर लास्ट ईयर कंप्लीट बात करेंगे तो 12,500 किलोमीटर की प्रोजेक्ट अवार्डिंग हुई है डिस्पाइट ऑल कोविड कंसर्न्स एंड ऑल. एंड अगर कंपनीज की ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो L&T हो या PNC इंफ्रा हो, NCC हो, सभी के ऑर्डर बुक क्वाइट स्ट्रॉन्ग है. तो अगले 2-3 साल की ग्रोथ, रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड अर्निंग्स विजिबिलिटी हमें दिखती है. अगर मार्जिन्स की बात करेंगे तो थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं उसके वजह से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमें दिखा था, लेकिन बिकॉज इनके पास जो इनकी ऑर्डर्स होते हैं वहां पर प्राइस पास थ्रू क्लॉज होता है, इसके वजह से लॉन्गर रन में ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा. एंड कंपनी कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट अ डबल डिजिट रेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इवन इन L&T केस और PNC इंफ्रास्ट्रक्चर केस. तो हमारा पॉजिटिव आउटलुक है इस पे. एंड वी लाइक L&T, PNC इंफ्रा, NCC. These are the stocks that we like. Thank you, Pankaj. Now, one last question. Sumit sir, can you please share your views? Sorry, can you please share your views on Naukri for long term? Yeah. So Naukri, we are very bullish on the company. We believe the fair value is 4,330 rupees. See, ये एक कंपनी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं और इवेंचुअली कभी ना कभी जैसे वो स्केल अप होते जाएंगे कंपनी में इनको लिस्ट कराने का प्लान है. सो बहुत वैल्यू क्रिएट कर रही है कंपनी इसके अंदर. सो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई
इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है तो इसको डेफिनेटली कैन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को लगता है कि इवेंचुअली अभी बिकॉज कुछ इसके कंपनी लॉस मेकिंग है, दे विल टर्न अराउंड, सो वहां पे भी काफी वैल्यू क्रिएट होगी। सो वी आर बुलिश ऑन naukri.com. Thank you, Sumit. So dear viewers, I would like to invite Shrikant sir for some closing comments. Yeah, thank you, Renee. See, we in the previous month we were expecting market to sustain or to stay above the levels of 16,000, but due to a sudden rate hike, and it was completely unexpected that the rate hike will come in such a short span of time. We saw the market was cracking, and we during the month saw the market was falling to the levels of 15,000, some 700 levels. But even after hitting those levels, the market managed to survive above the important level of 15,670, which was its previous lowest level. And in technicals, always these levels works. So it forms double bottom sort of formations, and it indicates that somebody is really interested in the market to buy at the same levels. After hitting those levels, we saw the market recovering back to the levels of 16,800, which is positive, because to expect a gain of 1,000 points was not at all when the macro scenario was not that great. But we saw recovery in US markets as well as in Indian markets. अगर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यूएस मार्केट्स जो है वहां पे आपने देखा होगा कि जो करेक्शन था इट वाज अराउंड 40% ऑफ द एंटायर रैली। जो पैंडेमिक के टाइम पे जो हम लोगों ने रैली देखी थी, उस रैली के जो गेन्स थे उसका 40% करेक्शन दिया था यूएस मार्केट्स ने, आई मीन से डाउ जोन्स ने, S&P 500 ने, नास्डैक ने दिया था ऑलमोस्ट 61.8%। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हमने करेक्शन किया है ऑलमोस्ट 23-25%। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो इंडियन मार्केट्स है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अगर हम एफआईएस के फिगर्स की अगर बात करें तो जितनी भी एफआई की सेलिंग आ रही थी उसे डिफेंस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है, हैंडल किया है और ऑलमोस्ट 80-90% एब्सॉर्ब किया है। अगर यही जो सेलिंग एफआईएस की अगर मार्केट में अगर चली जाती तो मुझे लगता है कि मार्केट बुरी तरह से क्रैश होता। बट अभी भी अगर आप देखें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हिमालय ने बताया था कि अभी भी अगर आप देखें तो एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23 के एस्टिमेट्स के बेसिस पे हमारे मार्केट जो है वो अभी भी एक कॉस्टली मल्टीपल्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और इसी वजह से एफआईएस की जो सेलिंग है वो रुक नहीं रही है। अभी दो ट्रिगर्स काफी इंपॉर्टेंट है। वन इज कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से और नीचे आए, 100 के करीब आए या तो 100 के नीचे आ जाए। वो पॉसिबल है अगर रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेड अगर यूएस में अगर एक्सपेक्ट अगर करते हैं एक्सपर्ट्स, तो या तो जो क्रूड है जहां पे अभी हमने कल एक ओपेक मीटिंग के बाद के आउटकम देखा था कि सऊदी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है, अगर वहां पे अगर ब्रेंट क्रूड में अगर कोई करेक्शन अगर आता है बिलो 110 अगर वो आ जाता है तो ये इंडियन मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले चुका है या तो सर्वाइव हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स की जरूरत है। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस सडन rise in the crude prices and inflation, we saw multiple changes in terms of policies, in terms of reforms and all. So काफी सारे changes गवर्नमेंट की तरफ से आ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कुछ एक्सपोर्ट्स जो कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा कर्टेल कर लिया, इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया। All these things are affecting to the major maybe companies और मेजर सेक्टर्स, कमोडिटी सेक्टर स्पेशली, जिसके ऊपर जतीन ने भी बात की थी। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर रहेगा बिटवीन 17,500 एंड 15,500। ये एक ब्रॉडर रेंज है मार्केट के लिए। 16,800 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आज के दिन में आज गैप अप ओपन होने के बाद भी हमने एक बड़ा करेक्शन इसके लिए देखा, बिकॉज देयर वाज लाइक सम वरीज कि शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो अचानक से बढ़ के ना आ जाए, बिकॉज ऐसे होता है कि
अगर जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है तो जो आरबीआई होती है, तो जो बैंकर्स होते हैं, सेंट्रल बैंकर्स जो होते हैं, वो लोग अचानक से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, ओवरनाइट बढ़ा देते हैं, और उसी फियर की वजह से मुझे लगता है कि आज मार्केट में एक सेलिंग थी। अगर कोई इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर अगर कोई और कुछ मोहर नहीं लगती है, तो मुझे लगता है कि शायद मंडे को हम वापस एक बार ऊपर खुलेंगे। यूएस इक्विटीज ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे रिकवरी मोड में है और काफी दिनों तक बाउंस बैक हमें देखने मिलेगा। समवन हैज आस्क्ड कि हम लोग 18,000 पहुंचेंगे क्या? पॉसिबल है, 18,000 पहुंच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है वो यही है कि क्रूड और डॉलर इंडेक्स, मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा कूलिंग ऑफ हो रहा है, बट अगर थोड़ा और कूलिंग ऑफ होने की जरूरत है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है। अगर थोड़ा और कुछ दिनों तक अगर ये 17-18 के आसपास अगर क्रूड ट्रेड करता रहे, तो मुझे लगता है फिर ये करेक्ट हो सकता है, डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारी दिखने को मिलेगी। काफी सारे स्टॉक्स में हमें लगता है कि मोमेंटम देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज 2300-2400 के करीब था, अभी ऑलमोस्ट 2800 के करीब आ चुका है, और कोई ना कोई स्टॉक बढ़ते रहेगा। एल&टी अगर आप देखें या इन्फोसिस देखें, तो जो लार्ज कैप कंपनीज है जिसके ऊपर हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, और ये सभी स्टॉक्स जो भी है, आई एम टेलिंग यू, ये सब 12 मंथ्स के बेसिस पे हम खरीदने की सलाह देते हैं। तो जो भी एडवाइस आता है मंथली स्ट्रेटेजी में, वो 12 मंथ्स का होता है, और इसीलिए हम अगले महीने उसका रिव्यू नहीं लेते। बिकॉज क्या है कि ये सब स्टॉक्स आपको खरीदने हैं, ओवर द पीरियड आपको इसे एक्यूमुलेट करना है, तब जाके आपको रिटर्न्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मंथली बेसिस पे आज दिया है तो इसी मंथ में चलेगा। बट यस, वी ट्राई टू टाइम समटाइम्स, आई एम टू से इस बार हम लोगों ने कुछ ऐसे स्टॉक्स को कवर किया है जो जहां पे अपसाइड इज वेरी वेरी हाई, और इसी वजह से हमें लगता है कि आप जहां पे भी कंफर्ट है, जहां पे आपको लगता है कि कंपनीज आर वेरी स्ट्रांग, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले 6 to 12 मंथ्स में काफी अच्छी रिटर्न्स बनेंगे, और मार्केट के जो वॉलेटिलिटी को आप अगर ज्यादा क्लोजली ट्रैक करेंगे तो फिर आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो जस्ट कीप बाइंग गुड कंपनीज। Every month we tries to come out with good companies, good set of companies which can help investors to add and to make money in the long run. और भी काफी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे रिनी ने बताया कि टाइम कंस्ट्रेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किसी ने दीपक नाइट्रेट के ऊपर पूछा है, किसी ने कुछ आईटी स्टॉक्स के ऊपर पूछा है, हम लोगों ने देखा, लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट कि उतना टाइम नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर आपको आईटी कंपनीज अगर लेनी है तो जो टॉप 3 कंपनीज है वहां पे आप फोकस कीजिए। सिमिलरली हर एक सेक्टर में जो भी टॉप कंपनीज है वहां पे आप फोकस कीजिए, और कीप ऑन इन्वेस्टिंग, बाय इन ट्रांचेस। दीपक नाइट्रेट की अगर बात करें तो वहां पे एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ है, क्या हुआ है, बाद में पता चलेगा। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखें तो इवन आफ्टर दिस इवेंट कोई बड़ा फॉल हमें देखने नहीं मिला है। इनफैक्ट बड़े वॉल्यूम्स हो चुके हैं। अभी 1-2 दिन के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि पॉसिबल होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इनलिक्विड स्टॉक्स होते हैं वहां पे सबसे पहले फ्यूचर्स में सेलिंग आती है, और फ्यूचर्स में सेलिंग होने के बाद फिर वो कैश में सेलिंग कन्वर्ट होती है। सो हमें देखना है कि शायद मंडे ट्यूसडे कैसे सेलिंग आता है, क्या आता है। लेकिन हमें लगता है कि दिस कंपनी इज रियली स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, और लॉन्ग रन में अगर रखे तो हमें लगता है टेक्निकली भी ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड हो चुका है। वी नीड टू सी दैट कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या नहीं करके, बट हमें लगता है कि अच्छे स्टॉक्स में जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस काइंड ऑफ कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दिस कंपनीज नोज हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी हमने कई बार ऐसे कुछ ब्लास्ट देखे हैं, कभी आईओसी में हुआ है, कभी कुछ और कंपनीज में हुआ है, और उन कंपनीज ने काफी अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर इवेंट को, ऐसे इवेंट को मैनेज किया है। तो हमें लगता है कि जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखे, थोड़ा सा ट्रस्ट रखे मार्केट के ऊपर। और अगर हमारे मार्केट्स को अगर एक रिलेटिव टर्म्स में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर डूइंग रियली वेल। आपको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यस, जहाँ पे भी मिड कैप स्टॉक्स थे, जहाँ पे भी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थे, वहां पे करेक्शन आया है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज है वो अभी भी इंटैक्ट है, और हमें नहीं लगता कि वहां पे कोई और बड़ा डेंट आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। So thank you so much, and thank you so much for giving us time, listening us for such a long period. And what I can say more, I think I'm handing it over to Rini for it. Thank you, Shrikant sir. That was very useful, and I hope our viewers also found our webinar useful.
So guys, if you are curious for more research updates like these, do check out Kotak Securities Telegram, Twitter and Instagram channels. And thank you for joining us today. Thank Thank you. you.